My name is Abdullah and I am from class 5. Today, my topic is to not compare yourself with others, be your own comparison. डियर सर, मैंने टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मैंने इसको इन सिचुएशंस को स्कूल में और घर में बहुत बार फेस किया है. Yes sir, it is an excellent topic but tough one. It is very natural to compare ourselves with others. It's true, but it makes us unhappy. This is the modern era. Jobs, title, income, grades, Instagram and Facebook likes are the number of categories we compare ourselves with others. Dear fellows, I am a position holder of my class, but cannot enjoy 93 always because I am always compared with 94%. और फिर आप सबको तो पता है जब मम्मा और रिजल्ट्स आमने सामने हो तो 93 भी enjoy नहीं कर सकते अगर 94 नहीं. मॉम कंपैरिजन इज पॉजिटिव. अगर हम कंपैरिजन को पॉजिटिव लें और उसे कंपटीशन के साथ लिंक कर लें तो यकीनन रिजल्ट्स अच्छे आए. एंड यू कैन इम्प्रूव इन पॉजिटिव comparison. No matter how slow you are, as long as you don't stop. Dear sir, everyone is running in their own race, in their own path. Your path is different from the person's path running besides you. Dear fellows, just relax. Focus on your strength, focus on your blessings, focus on your strength. Dear sir, in Almighty Allah's hands, time is a tool. He makes things beautiful in His time. You are very much on the time. And in your times, the destiny is always written. No, always do your best. Allah will reward you according to His best. Thank you. Good morning and Assalamu alaikum to you all. My name is Saruj Javed and I am from class 9th. The topic that I have chosen is the failure can be the fuel to a successful future. We all have different objectives and aims in our lives. Some of us have aims and targets while their childhood, but some of us adopt this during education while getting some exposure. Many times we try our best and do our best and do our utmost efforts and work as hard as we can, but in order to achieve our goals, but all in vain. But if we try to learn from our unsuccessful tries and efforts, we are able to get it more better and the best. It always seems impossible until it is done. Such as many medical students appear again and again in their exams, but it is not. Although they get disappointed when they have not passed their exams, but they should be confident, should not lose their hopes, and should appear again in their exams. At last, they will definitely defeat failure. They will definitely defeat failure and will be able to hold the hands of success. There is no failure except in no longer trying. As the Holy Quran says, with every hardship there is ease. All of you will be familiar with the story, the spider and the cave. The spider faced failure 6 times, and the 7th time he was able to make its web. And as a result, the king also learned from the spider and was able to defeat his enemy. So we should try and try again. In every sphere of life, we have to face difficulties and problems. No one can live a happy life and a successful life without having problems and failures in his life. We should never give up and lose hope and should always be confident. The loser is not the one who fails, but the loser is the one who gives up. The Holy Prophet peace be upon him said, indeed the greatness of a reward is according to the trial. And when Allah Almighty loves a person, He tests him. Winners never quit and quitters never quit. So we should always have faith in ourselves and should be ready to face problems and failures. Not only this, more than 50% of our successful personalities have reached to their goals by learning from their failures and by facing them confidently. So the secret of this success is that never give up. If you fall behind, run faster, never give up, never surrender, and rise up against the odds. So we should recognize our personalities and abilities, and we should always be confident and courageous while facing all the difficulties. Then we should choose our path and do our most efforts. Thus, failure is a way to the successful path. Thank you. Good morning and Assalamu alaikum. As you know me, my name is Fizza and I am the student of class 9. Today my topic is the journey is more enjoyable than the destination, because in this we know how we will go to our destination, which is our final way. We can make our journey more interesting and more enjoyable than when we will do the hard work. अगर हम ये तो नहीं ना कि हम पेपर देने गए हैं वैसे जा चले गए, कुछ याद तो किया. अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी जो मंजिल है वो हमारे करीब खुद आएगी.
और इस हिसाब से when we will take our destination with the hard working, हमारी जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो दूसरी डेस्टिनेशंस को करता है हमारा दिल कि हम वो भी अपनी मंजिल दूसरी पे बने फॉर द डे ऑफ जजमेंट. अगर हम अपनी आखिरत को सही करना चाह रहे हैं, हम वी विल ओबे आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूल्स. उनकी सुन्नत पर अगर हम करेंगे तो हमारी आखिरत बिल्कुल संवर जाए. इसी तरह हमने उसी को अपने सामने रखते हुए अपने सब जो हम पेपर्स में करते हैं मेहनत, हमारा ए ग्रेड रिजल्ट आता है. अक्सर जब हम मेहनत करते हैं हमारा ए ग्रेड रिजल्ट आता है, और जब खुशी होती है वो मज़ा आता है, वो खुशी जो हमने मेहनत करके खुद ही ली है. इसी तरह अगर हम अपनी आखिरत को संवारना चाह रहे हैं, हम मेहनत करते हैं. यहाँ पे अगर ये तो नहीं ना कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं और गलत काम करने पर हमने हाथ रखा. हम जब तक वो नहीं रोकेंगे वी विल नॉट गेट आवर डेस्टिनेशन गुड. हम जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे हमारी डेस्टिनेशन हमें कभी नहीं मिली. और जब एंड पे हमारे पेपर्स हो जाते हैं, हमारे रिजल्ट मिल जाता है, हमें खुशी होती है कि हमारा जो इंटरेस्टिंग था, हमारी जो हार्ड वर्क थी वो आज हमें अच्छी तरह मिली है, हमें ए ग्रेड मिला. और आगे हमारे इंटरेस्ट और बढ़ता है कि हमने इस रिजल्ट को और बेहतर करना है, और हमारी इस चीज़ पर न होती है कि हमने बाकी डेस्टिनेशंस कैसे. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू हार्ड वर्क. ये नहीं कि आप दूसरों की मेहनत को आगे रखोगे, पेपर्स में चीटिंग करके हमने पास होना. इट इज़ नॉट आवर मेन डेस्टिनेशन कि हमने चीटिंग करके पास होना. ये कोई नहीं है. हमने अपनी मेहनत से पास होना है, अपने जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाना है, इंजॉयबल बनाना है, ताकि हमें दूसरी डेस्टिनेशंस भी करने में मज़ा आए. बट इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू हार्ड वर्क फॉर योर डेस्टिनेशन, for the destination of the day of judgment, which is the last destination of everyone and is the main destination in the world. Thank you for your attention towards my topic, which is the journey is the more enjoyable than the destination. Thank you. Before I start my topic, I would like to say a few golden words of one of my favorite authors, Dr. Seuss. Today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is youer than you. Dr. Seuss is one of my favorite authors because he focuses on different topics at the same time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Manahil Majid, and today the topic I am going to talk to you on is don't compare yourself to others, be your own competition. Often at times we're always looking at other people, what they're doing, and not what we can do. We're always looking at, one day I was sitting with my sister and I was telling her a story, and it's called The Little Cedar Tree. The tree had little pointy leaves and it wasn't happy with them because people wouldn't come near it. So every day it would wish for a new coat of leaves. One day it wanted a coat of gold leaves, one day it wanted a coat of glass leaves, one day it even wanted a coat of snow on it. And every time he'd want this stuff, it would always be worse for him than the last one. After I told her this story, my sister looked at me, she was like, Api, can I ask you a question? And I was like, sure. She was like, why did the cedar tree want a new coat of leaves? And I looked at her and I was like, because I wanted to be like the other trees. And then she thinks for a minute and she's like, but why couldn't it accept what it was? And that got me thinking, why can't we accept who we are instead of looking at what other people are doing? A saying says, and I quote, wrong is wrong, even if everyone is doing it. And right is right, even if no one is doing it. So I urge you, please don't compare yourself to others. Look at yourself. You're worth it. You should love yourself. We all have a good quality inside of us. No one is worthless. No one is useless. We all have something good inside of us. And if we stop comparing ourselves to others, even for 1 minute, maybe we'll be happier. A Harvard study indicates that 50% of the people spend their time living in the past and the future instead of actually focusing on the present and looking at other people, and this leads to increased unhappiness. So please, focus on the present, look at yourself instead of others, and I assure you, you'll be happy. Thank you.
Manahil, I must claim that the choice of the words today, it was wonderful, right? And the citations that you used, they were very well in place. The story that you have added to the script, I could see that they were listening to that eagerly, right? It means it was a gripping story. Then adding an example of a younger sister who you are talking to means introducing a dialogue into your script. That is again a hooking factor for the audience, right? So mingling all in this short time of 3 minutes is actually a success in itself, right, on papers. But the way you have delivered it today, right, I could see that you were spraying your sight and eye contact almost to everybody sitting here. And everybody must be feeling that the message was for his or her own self in specific, right? So that is what the strength and this is where the success of a public speaker lies. Now let it happen. You see, what did you just do? आपने ये सारा प्रेशर जो था वो अपने ऊपर उसको एक स्पॉन्ज की तरह आपने ग्रिप किया हुआ था. You didn't let it be shown to your audience. और अगर बाद में बैठ के ये सारा ट्रेम्बल हो रहा है तो doesn't matter. Part of the game. Now you can actually enjoy it. कितना मजा आता है ना कामते हुए, राइट? जब सीट पर बैठ चुके हो, अपना परफॉर्म कर चुके हो, उसके बाद अगर कोई शिवर आ रहा है तो यू कैन एक्चुअली एंजॉय इट. बाज़ वक़्त सर्दियों में आपने इस तरह पैर रखा होता है और आपकी टांग कांप रही होती है एंड यू फील लाइक ऐसा होता है, मजा आ रहा है ना, एज इफ यू सिटिंग इन सम म्यूजिकल कॉन्सर्ट, राइट? सो ये वाइब्रेशन जो है अब ये इसलिए शायद हो रही है कि आपने सोक कर लिया हुआ था सारे प्रेशर को उस वक्त, ठीक है? और अब की वाइब्रेशन जो है इसको आप लिटरली एंजॉय कर सकते हैं, राइट? So who wants to be the next on the hot seat? In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum to all. I am Noor Fatima, a student of 8th grade. Today the topic I selected is failures can be the fuel for a successful future. करते हैं मेरी खामियों का तस्करा इस तरह, करते हैं मेरी खामियों का तस्करा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ते हो जैसे. Before starting, I would like to ask you a question, but the condition is you have to answer me honestly. Who from you have failed anything before? Fail doesn't mean just an exam. It can be any game, it can be any task or any competition, or you can even fail in starting a business as well. Anyone like to answer me? Okay, I personally also failed a sports competition, so I suggest no to see failure as a bad luck. It's an opportunity to try again and again as you're learning new things. English is a bit difficult subject for me. One day I was feeling sad because of my results and my friend changed my mood by telling me his job. After the English exam, mother asked, "How was your exam?" I answered, "It was easy, but the fifth question was a bit confusing." She asked, "What was the question?" I answered that they wanted the past tense of thing. I thought and right thanked. I have seen many people in my life who changed a failure into success. Anyone knows about Einstein? Yes. Einstein is one who uses his brain properly. He is the one who won the Nobel Prize and entered his name in the world history. I know an interesting fact about him. My fifth grade teacher told me that he has more creases in his brain than a normal brain had, and he never ever combed his hair and never tie up his shoelaces. He has an interesting quote: "Anyone who never failed never tried anything new." There are some ways that you can turn your failure into success. First, look at the reasons and list the reasons what make you fail. Then acknowledge your mistakes and learn from your mistakes. Be hopeful, don't lose your hope, and be confident to try the new things. वो पत्थरों से मांगते थे अपनी मुरादें, वो पत्थरों से मांगते थे अपनी मुरादें, हम उनके उम्मती हैं जिन पर पत्थर भी करना पड़ते हैं. I pray that Allah gives us a strength to all in every field of life. Thank you. You know that
something mellow is going inside and you're trying to actually put off that fire of nervousness somehow. So instead doing this, you can actually keep it like this, right? So this is actually a sign of a powerful body language. And what you can do is, you can press with these 5 fingers, you can press upon these 5 fingers, right? So all the nervousness actually gets into them, right? And when you thrust them against each other, you can feel the power and strength there in your shoulders, right? So this is what this nervousness actually starts giving back to you, right? You acknowledge, okay, there is some nervousness, but I'm channelizing that nervousness into my strength and confidence, and this is the way I hook it, right? So instead doing this thing, you don't have to do that in front of the audience. What you could have done, you simply could have come here. And the way she does, she rests one hand here and she talks with the other hand, right? So this is a smart move. So as a speaker, you are considered to be somebody really intelligent, who can cope with the varying and different situations, right? So adaptability should be your flag. You need to use this sense of adaptability, skill of adaptability at different times, right? This is your own stage. You need to improve and improve for the betterment. Who is the next one? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है, मैं दिनोली स्कूल हवेली कौकाड़ा में 9th क्लास में पढ़ता हूँ। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्ताने के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्ताने के गुंबद पर, तू शाही है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो ये है कि अपना बास खुद बने, बजाय इसके कि मेरी जिंदगी को कोई और ड्राइव करे। मुझे खुद इस काबिल बनना होगा कि मैं खुद को ड्राइव कर सकूं। अपना बास खुद बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर देखना होगा कि कुदरत ने हमें कौन सी खूबी से नवाजा है जो हमें दूसरों से मुमताज करती है। अगर आज हम इस खूबी को डिस्कवर नहीं कर पाए तो फिर हम ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे और अल्लाह के दिए हुए इस तोहफे को पुरमुसरत बनाने के बजाय कोसते हुए गुजार देंगे। अपना और दूसरों को बास बनने के लिए हमें अपनी स्किल्स की तरफ तवज्जो देना होगी। अपने अंदर कामयाब लोगों वाली सीरत पैदा करनी होगी, सीरत का मुतालिया करना होगा। अपने इस्लामी हीरोज की बायोग्राफी के साथ साथ हमें पाकिस्तान बनने वालों को जिंदगियों को देखना होगा और इन पे अमल करना होगा। आज हम 14 से 17 साल वाले लड़के इधर बैठे हुए हैं, लेकिन हम पीछे मुड़कर जाते हैं तो पता चलता है कि 17 साल मोहम्मद बिन कासिम हिंद और सिंध फतह कर लेता है। अगर हम ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। आज से हम गल सीट करें और बड़े ख्वाब देखें और उनको पूरा करने के लिए अमली मैदान में कूद जाएं और तरक्की की मनाजिल तय करते जाएं। अल्लामा इकबाल के इस शेर में से मैं अपनी गुफ्तगू का इत्माम करूंगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। Wonderful. I would say बेटे थोड़ा सा ना आपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा भी पहले लोकलाइज्ड एक्सेंट होता था उर्दू में भी, जब मैं उर्दू बोलता था तो उसमें पंजाबी जो है उसकी झलक जो है वो महसूस होती थी। लेकिन ये कि लफ्ज़ की अदायगी जो है उसका, जैसे वर्ड है बॉस, तो हम ये वर्ड अंग्रेज़ी वाला ही बोल रहे हैं, राइट? तो जब हमने इसको बोलना है तो अगर हम इसे बास बोल देते हैं तो आपको पता है कि बास जो है वो शायद उर्दू में स्मेल को भी बोलते हैं, ठीक है? मछली के अंदर जो बास होती है उसकी जो स्मेल होती है, उसकी बू जो होती है, ठीक है, बू या बास, राइट? पंजाबी में और उर्दू में ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। सो हमारा लफ्ज़ क्या था? बॉस। बी योर ओन बॉस, ठीक है? इन चीज़ों का छोटा छोटा आपने ख्याल करना है। और आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन हर बच्चे के पास भी घर में मौजूद है। सो यू हैव एन एक्सेस, यू कैन टेल योर पेरेंट्स के आई वांट टू सी द प्रोनाउंसिएशन फॉर एनी वर्ड, ताकि जब आप स्टेज के ऊपर आए ना, स्टेज इस चीज़ का मुतकाज़ी होता है कि आप लोग प्रिपेयर्ड होकर आएँ। प्रेपरेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज की भी है, प्रेपरेशन आपके कंटेंट की भी है, प्रेपरेशन आपकी डिलीवरी की भी है और आपकी प्रोनाउंसिएशन की भी है,
ठीक है. तो ऐसा भी मुमकिन है कि आप यही स्क्रिप्ट जो है वो किसी दोस्त को या किसी बड़े को, किसी फैमिली में ऐसा शख्स जो अच्छा बोलता हो, आप उसे देकर उससे कहें कि आप हमें वॉइस रिकॉर्ड करके इसकी ज़रा व्हाट्सएप कर दें. आजकल तो ये भी वॉइस नोट्स भी भेजे जाते हैं ना, तो 2 मिनट का स्क्रिप्ट तो इतना लंबा होता भी नहीं है. सो यू कैन ऑलवेज, आप अपनी प्रेपरेशन के अंदर भी क्रिएटिविटी ज़रा लेकर आए. मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर लगा माशाल्लाह, ठीक है. और इतनी दूर से आप आते हो ट्रैवल करके हर वीक में, मुझे तो वैसे ही बहुत खुशी आपको देखकर होती है. बट आई ऑलवेज बिलीव कि सिंस ऑल दीज परफॉर्मेंसेज आर बीइंग रिकॉर्डेड, सो व्हाट यू शो टू द वर्ल्ड दैट इज़ द बेस्ट ऑफ यू. ठीक है, तो इसको घर के अंदर जो है ना अच्छे तरीके से प्रेपरेशन के प्रोसेस में से अपने आप को गुजार के लेकर आया करो. राइट, इनके लिए बहुत सारी तालियां एक मरतबा फिर, मुझे बहुत अच्छा लगा. नाउ हु वांट्स टू बी द नेक्स्ट? शाबाश. लास्ट वीक में भी मैंने आपको यही बोला था कि प्लीज अपने लिए लैंग्वेज का मीडियम वो सिलेक्ट कीजिए जो आपके दिल के करीब है. बेटा मकसद ये है कि हम अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएं. हम जो बात कह रहे हैं उस पैगाम की आसानी से किसी को समझ आ जाए. तो एक पब्लिक स्पीकर जो होता है वो लैंग्वेज से मुताल्लिक बाइस्ड नहीं होता. अब मैं अगर आसानी से अंग्रेजी बोल लेता हूं ना, तो मैं ऐसा नहीं करता कि हर जगह के ऊपर मैं अंग्रेजी ही बोलता हूं. अगर मेरे सामने कोई पंजाबी बोलने वाला बैठा हुआ है ना, तो मुझे यूँ महसूस होता है कि इसको मेरी बात पंजाबी में ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी, तो मैं उसके साथ पंजाबी बोल लेता हूँ. तो लैंग्वेज वो बोलनी है हमने जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं. इसे बोलते हैं कोड स्विचिंग. Assalamualaikum. I'm Hafsa and today my topic is don't compare yourself with others, be your own competition. We are taught to compete, but no one ever told us that if we want to shine like a sun, first we have to burn like it. Wow. Comparison eliminates happiness, self-confidence and gratitude. Also, it don't allow you to step forward. Don't compare yourself, don't compare your episodes because you don't know which direction someone else is going. For example, if I compare an animal cell with the remote cell, what would be the result? If you actually want to know where are you, do compare your present with your past. If your today is better than your yesterday, you're getting smooth and going smooth with the flow of life. But if your today is not better than your yesterday, true dedication and hard work is required. No one is perfect to compare with. Do your best and be happy. It's not important to have all the best stuff to happy. It's all about the inner satisfaction. Learn from your past, utilize your present and secure your future. Be God with you. Thank you. When she comes, Hafsa, right? When she comes on the stage, it seems as if public speaking is a child's play. She makes it look so easy through her tone, right? But then she makes it even easier and easier for herself. And that is where I feel that the energy starts coming down, right? Audience के अंदर हर तरह के लोग बैठे होते हैं जिनमें से कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी देर में वो सो जाएंगे. तो ऐसे लोगों को जगाए रखने के लिए आपका जो अंदाज है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन की गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए. एंड इफ आई फील कि मेरी ऑडियंस के अंदर कोई ऐसा बंदा या बंदी बैठी हुई है जो कि ऑफ हुक हो गई है किसी वजह से, शायद उसने मोबाइल के ऊपर किसी का मैसेज अपने घर में से पढ़ लिया है और कोई अर्जेंसी क्रिएट हो गई है, राइट? या शायद उसके सर में दर्द होगा, राइट? लेकिन मेरी स्पीच कितनी देर के लिए थी? 3 मिनट्स के लिए. तो क्या मैं 3 मिनट के लिए कैन आई मेक माई स्पीच अ थेरेपी? कैन आई मेक माई स्पीच अ मेडिसिन? Can I maneuver my words and my accent and my way of saying things in such a way that the person who I feel has become off hooked gets hooked again, right? So I need to have and display this kind of a variation whenever I am on the stage. We have to keep people what you call it, alive and kicking all the times, so they can actually give us the feedback in the same coins.
राइट, थैंक यू वेरी मच अगेन जी, हफ्सा के लिए बहुत सारी तालियां। और आपका स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हुआ था, शाबाश। आपने डिज़ाइन के ऊपर, अपनी वोकल के ऊपर आपने ज़्यादा काम करना है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट चली जाती है बाज़-औक़ात, उसमें थोड़ा सा आपने जोश भी लेकर आना है, ठीक है। कीप योर स्माइल्स, दे आर वेरी गुड, लेकिन उसमें साथ साथ बीच में कहीं कहीं जो है वो आपने जोश और जज्बा जो है वो उसको लाने की ज़रूरत। Assalamu alaikum. My name is Munibur Rahman and I study in class 7. Today the topic I choose for today is be your own boss. You are at the wheel. You make your decisions yourself. There is a great satisfaction in being able to act on hunches, make guesses and just do it. This is a big deal to me. I am one of those people who feel safer when I am driving than when I am a passenger. When you are your own boss, you eliminate the old-fashioned to warm a chair for specific hours. You become responsible for your output, not your hours. You set your own work style, workplace environment, and to the extent you can afford the workplace equipment. Imagine a life in which you can live on your own terms. You have the freedom to choose how you spend your time and projects on which you work. With enough planning, patience, and determination, this situation can be yours. Life is way too short to waste time doing things that you most hate. Be an entrepreneur and get paid to do something that you like the most. When you work for yourself, you call shots. You will be more creative, determined, and motivated as a result. Instead of becoming lazy, develop self-discipline by sitting down and drafting up a routine. Working for yourself will allow you to define what's meaningful to you. Working for yourself is an adventure. It will provide you with great stories, to tell wisdom, to impart a reason for people to remember and respect you. Thank you. Muneeb, it was a wonderful attempt, I must say. But bete, you must be remembering last time I said that you need to choose the medium of language where you feel that you are at home, right? I did ask you, did you check your script with somebody or not? So, अभी भी pronunciation में बहुत सारे ऐसे words थे कि जहाँ पे आप अटक रहे थे। पहली बात तो ये, तो when you are actually there for public speaking, ऐसा होना चाहिए। So when I said कि आपको script आपका जो है वो 100 times आपने prepare करना है, तो 100 times बेटे आपने अगर script के अंदर गलतियाँ थीं या आपकी pronunciation में गलतियाँ थीं किसी जगह पे, तो वो 100 टाइम्स गलतियों की प्रैक्टिस नहीं करनी कि 100 टाइम्स उसे गलत 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 बोलना है हमने, ऐसा नहीं करना हमने। व्हाट वी नीड टू डू इज, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दैट यू नीड टू गेट योर स्क्रिप्ट्स checked with somebody elder to you who has an experience and insight into that particular language. ठीक है, उस लैंग्वेज में जिसकी दस्तरस है उसके ऊपर, जो उस लैंग्वेज को जानता है, उसको समझता है, पहचानता है। आपने अपने स्क्रिप्ट को चेक भी करवाना है और अपनी प्रोनाउंसिएशन भी उनके साथ करेक्ट करनी है। तो अगर ऐसा होता तो ये वाली मिस्टेक्स बीच में ना होती। आपका कंपोजर स्टेज के ऊपर जो था वो पहली मरतबा से बहुत बेहतर है। ठीक है, यू आर लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस ऑल द टाइम्स, विच इज़ समथिंग गुड। आई एम वेटिंग फॉर द टाइम कि जब तुमने अपना स्क्रिप्ट जो है वो पूरी तरह याद कर लिया हो और उसको मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो आपने सिलेक्ट किया है वो आपका अपना कंफर्टेबल एरिया हो, एंड देन यू स्टेप आउट फ्रॉम देयर। उस पोडियम से आप बाहर आ जाते हो और शेर की तरह ऑडियंस के सामने आके जब आप खड़े होते हो और अपना स्क्रिप्ट जो है वो आप राइट अगर आपके पास हाथ में नोट्स हैं, यू नीड टू कीप सम पॉइंट्स देयर, ताकि आप अपना पूरा मैसेज जो है वो डिलीवर करो। या क्योंकि पावर पॉइंट तो नहीं बना रहे ना आप लोग, तो ऐसी सूरत में फिर यू कैन एक्चुअली चेंज योर जेस्चर्स ऑन द। और ये बच्ची जो है, इसका मुझे वो जेस्चर्स जो रोस्ट्रम को जिस तरह से ये यूज़ करती है ना, शी स्टैंड्स देयर लाइक अ क्वीन ऑनेस्टली। आई मीन आई लाइक द वे शी स्टैंड्स माशाल्लाह से।
बड़े एतमाद के साथ, आपने इसकी पिक्चर्स भी शायद देखी होंगी, राइट? बहुत इंप्रेसिव सा. सो सिंस वी आर बडीज हियर, हम सब दोस्त हैं यहाँ पे, तो आप एक दूसरे के अंदाज के अंदर अगर कोई एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लाइकेबल है, जो डूएबल है, जिससे आपका भी कंपोजर जो है वो अच्छा हो सकता है, यहाँ प्लीज़ उसे फॉलो करें, राइट? ताकि हम जल्दी जल्दी जो है वो देखकर अपने आप को सिखा कर आगे बढ़ जाएं. स्क्रिप्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, प्लीज़ पूछना भी है घर वालों से. प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. कोड स्विचिंग जो है उसको आदत बनाएं. हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पे लोग, हमारी ऑडियंस जो है वो उर्दू बोलने वाले भी हैं, वो पंजाबी बोलने वाले भी हैं, और वो अंग्रेज़ी बोलने वाले भी हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमें कोड स्विचिंग, अप्रोप्रिएट कोड स्विचिंग जो है वो आनी चाहिए, ताकि हम अपनी बात जो है वो लोगों के दिलों में और जहनों में उतार सकें. जी नेक्स्ट कौन है? Hello, my dear fellows. My name is Samir Fatma and I am from DPS Shikha. I study in class 5. Today, I have selected the topic of journey is more interesting than the destination. Journey versus destination really mean to focus on the journey instead of focusing on the destination. It does not mean to attach with the final destination. It does not mean to not having the destination. There must be the destination to inspire you to set out on the journey. Destination changes with time, but journey is what keeps you motivated. All the fun is in the journey. Many people, when they reach at a particular stage, try to settle down. But settling down makes you rusty. The real people you met in your life are the ones who never settle down. So every new destination open up a whole new horizon for them, which ultimately leads to another journey, another path that need to be unraveled. Having wished for something is stronger until we do not get that fulfilled. In our wishes, we have ups and downs, which we really enjoy. Once our wish has been fulfilled, our struggle and our further desires for the same thing. The same case is with the fulfilling of our wish. Once I wished for a Barbie doll, a red one. My father asked me to get good grades in the final. I struggled hard and with full passion. It took me 3 weeks to get that Barbie. But once I achieved that Barbie, my wish had been fulfilled, my little destination. But my love with that Barbie did not remain same. Thank you. Wow. Some few grammatical mistakes, which are, आप किससे चेक करवा रही हैं अपना स्क्रिप्ट? Who do you? बेटे मेरे ख्याल है किसी और को भी साथ में इन्वॉल्व करो, बिकॉज मैंने लास्ट वीक में भी आपके स्क्रिप्ट के अंदर कुछ मिस्टेक्स जो हैं ग्रामर की नोट की थी. इस वीक में भी ग्रामर में कुछ मिस्टेक्स आपके स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हैं. तो इसका, क्योंकि मैं भी जब पढ़ाया करता था तो सारी चीज़ें मुझे उस वक़्त शायद ना आती हूँ, जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीख ली थी. तो मुमकिन है कि कोई चीज़ जो है वो हमारे सर के भी समझ में ना. इसका मतलब ये कि हमें किसी और को भी क्रॉस चेक करवा लेना चाहिए, राइट? अदरवाइज आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप यू स्टैंड देयर ऑन द सेंटर ऑफ द स्टेज. आपकी जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी वो इसी तरह से होनी चाहिए. और अगर ये स्क्रिप्ट आपने 100 टाइम्स पढ़ा होता तो फिर शायद वो जो थोड़ा सा आप बीच में भूली हो वो भी ना भूलती. देन यू कुड हैव मूव्ड एवरीवेयर, राइट? सो ज़्यादा मेहनत करनी है. जी प्लीज़ नेक्स्ट कौन है? My name is Nasir. I am from DPS Shikha and I study in class 6. It is true that failure can be the fuel to success, and because if we do mistakes in our life, if we fail in our life, then our experience will become stronger. And when our experience will become stronger, we can do better things than before. Basically, the failure is a fear, and we are afraid from this. We are afraid from this failure because sometimes we do not prepare ourselves before performance. We do not prepare ourselves before performing on the stage. And if we will prepare ourselves well, and then we can do better on the stage. And there are many personalities who failed many times in their
life, but they did not stop. They try again, and they succeed in their life. Imran Khan, he is the Prime Minister of Pakistan. He struggled 22 years, and before a Prime Minister, everyone says that he cannot be a Prime Minister. He cannot change Pakistan, but he showed his ability, and now he is a Prime Minister. So we all should not afraid from this fear, and we should try our best and try again to do better things. We should do experiments so that our experience will become stronger and we can success in our life. Assalamu alaikum. My name is Farkali Tari. I am from Oman in DPS. Today my topic is the journey is more interesting than the destination. सफर जो उर्दू के अंदर डेस्टिनेशन को जर्नी को कहा जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. इसकी लिटरल मीनिंग जो इसकी लिटरल डेफिनेशन होती है पॉइंट ए से पॉइंट ए के जाने तक जो एक सफर के अंदर जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने तक जो टाइम और जो मेहनत लगती है उसको आप जर्नी कहते हैं. अब जर्नी जो होता है वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में नहीं होता. जर्नी एक आपकी जिंदगी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और जो सफर होता है वो असल के अंदर वही चीज मेन होती है जो आपको उस जगह तक लेके जाती है. आप सफर किए बगैर अपनी डेस्टिनेशन तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हो. मैं आप सबसे एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा कि डू यू रिमेम्बर द जर्नी मोर और द डेस्टिनेशन? जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं अपनी जो आपकी रिक्वायर्ड एक डेस्टिनेशन होती है एक मार्क होता है जहां पर आपने पहुंचना है आपको उसके बारे में इतना नहीं होता है. यू सी द नेक्स्ट मोटिव द नेक्स्ट गोल जो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी आप वहां जाने के लिए. मगर जर्नी होती है उसकी छोटी इटी बिटी पार्ट्स जो होते हैं आपके ज़हन के अंदर रह जाते हैं. आपको याद रहता है कि भाई मेरे दोस्त थे उन्होंने ये किया मैंने ये किया. मैंने प्रोग्रेस जब कर रहा था तो मैंने ये चीजें सीखी अपने साथ. तो मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि जो जर्नी होता है वो हमेशा रिमेम्बरेबल होता है. मैं एक छोटा सा कोट देना चाहूंगा जो मैंने खुद ही बनाया है. द जर्नी इज द प्रोसेस इन विच यू प्रोग्रेस. जब तक आप जर्नी के पास नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे. कभी भी आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकेंगे.